we discuss about the table, how we prove this equal relation or this logical equivalence. The logical equivalence means you are proving the left hand side is equals to the right hand side by the help of the truth table. In that case, what we are doing, we just make a column of this left hand side and then make a column of right hand side, and then we compare every unit of this, every entry, every element must be same of both the columns. In that case, we need the relation between PQR, so we write PQR. Then we need P or Q. We write here P or Q, 1 column, 2 column, 3 column, 4 5 6 7 and 8 column we have made, and this column is 7 column and now this is 8, and then you can compare 7 and 8, every entry must be same, then it is called the logical equivalence. Now we go to the next topic, and that is converse, contrapositive and inverse. What is converse, contrapositive and inverse? These three relations are for the implications. Okay, this is especially for the implication. Converse means if P implies Q. If P implies Q is an implication, then converse of that is Q implies P. Okay, we can write it like P implies Q and the converse is Q implies P. That is called converse. Note it down, please. And then contrapositive means negation Q implies negation P, and inverse means negation P implies negation Q. I repeat, what is converse? Converse means if P implies Q is an implication, then converse of it is Q implies P. What is contrapositive? Contra means the negative part, or positive. Contrapositive means negation Q implies negation P, and the inverse means negation P implies negation Q. I'll give an example of all. Suppose there are two, so we can make the truth table also. So make the truth table PQ, PTFF, Q I write TF, TF. When P implies Q का क्या मतलब है? P implies Q का मतलब है Q never be false. Okay, so T T T, T F F, F T T both are false, then again it is true. Then we need Q implies P, because Q implies P का क्या मतलब है? Converse. So Q implies P. Now you have to give from this side to this side. T T T, F T T, T F F, because now this time your conclusion part is P and both are false, then it is true. In that way we can make negation P true ka false, true ka false, false ka true, false ka true, and negation Q is like true ka false, true ka false, false ka true, true ka false, false ka true, and then we find out negation P implies negation Q. Negation P implies negation Q, both are false, it is true. If P is false but still Q is true, then again it is true. If P is true, Q is false, then it is false. P is true, Q is true, then it is true. So it is like that, and negation Q implies P. Then we go to this. So this time your conclusion part is negation P. है ना, हम ऐसे जा रहे हैं, negation P and then we can make it. So this is called the truth table for converse, inverse and contrapositive. Okay, and I can give some example also. Suppose there is a statement, it rains, and the conclusion part is the crop will grow. It rains, the crop will grow. जैसे आज बारिश हो रही है, तो somebody state today is raining, the crop will grow. So P is your proportion because it is a statement that today is raining, and Q is the conclusion part, the crop will grow. अब आपसे पूछा है converse, inverse and contrapositive. So your implication part is P to Q, that if it rains, then the crop will grow. This is your P implies Q. This is your P implies Q. So you can note it down. If
it rains, then the crop will grow. Okay, converse क्या था? Converse means Q implies P. Q implies P converse था, तो क्या बनेगा अब आपके पास? If the crop grows, then there has been rain. Then अब आपके पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी क्या बनेगा? नेगेशन क्यू का मतलब रेन ग्रो नहीं हुआ और पी का मतलब बारिश भी नहीं हुआ. दैट्स मीन इफ द क्रॉप डू नॉट ग्रो, देन देयर वाज नो रेन. Or you can write there has no rains, there no rains, there no rain has been, or you can write the negative part of that negation P. And the negation P is it's rains. तो negative P होगा it's not rain, it do not rain. Inverse क्या होगा? negation P implies negation Q. तो it does not rain, then the crop will not grow. Negation P implies negation Q. If it does not rain, नेगेटिव सेंटेंस बनाया हमने किसका? इट रेन्स का. इफ इट डज नॉट रेन, द क्रॉप विल नॉट ग्रो. दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट. ओके, so I'll wait, you just copy this table and write this example. So we can do one problem here. Show that the contrapositive are logically equivalent. Show that the contrapositive are logically equivalent. So how you can prove it? Negation Q implies negation P is equal to P implies Q. तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? ट्रूथ टेबल से, जो हमने अभी ऊपर बनाई है और आपने नोट भी किया होगा. नेगेशन Q implies negation P. Negation Q implies negation P. This column is equal to P implies Q. Is equal to P implies Q. This column. देखो इस कॉलम के सारे एलिमेंट और इस कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है. That's mean they both are common or they both are equal, and this is called logical equivalence. Okay, now the next topic is biconditional statement. Biconditional statement, you write here the definition of that. Biconditional statement लिखिए आप. If P and Q are two statement, if P and Q are statements, then the compound statement P, then the compound statement P, if and only if Q denoted by P implies and implies Q, या तो आप ये लिख लीजिए या आप ये लिख लीजिए. P implies and implies Q, called biconditional statement. Biconditional statement. Full stop. For example,
if there are two statement, she swims and Q है water is warm, तो इनका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा? She swims if and only if the water is warm. She swims if and only if the water is warm. तो इनका बाय कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा she swims if and only if the water is warm. So note it down. This is biconditional statement. You know the truth value of the biconditional? We have already discussed. What is the truth value of biconditional? You can make a truth table also here. You can make a truth table here also for the bicondition. याद होगा आपको PQ, P implies and implies Q. True, true, false, false. True, false, true, false. P both are true, then it is true. T, F, then it is false. FT, it is false. And then it is true only when both are false. If you wash my car, I will give you money, then it is true. If you wash my car but I will not give you money, then it is false. If you don't wash my car but I will give you money, not acceptable, because here is the condition if and only if. And then if you don't wash my car, I will not give you money, then it is true, because in that case also I kept my promise. If you don't wash my car, I'm not giving you anything. That's mean I'm. So this is a truth table for the double implication, or you can say it is for the biconditional. Make it if you don't have. The next topic is universal and existential quantifier. Universal and existential quantifier we require to make the statement into the mathematical expressions, or we need it to change the mathematical expression into the statement. तो ये हमारी हेल्प करते हैं क्वांटिफायर्स. क्वांटिफिकेशन आप जानते ही होंगे, किसी भी चीज को न्यूमेरिक करना. तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट को जो कि इंग्लिश में है हम उसको न्यूमेरिक कर रहे हैं, हम उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिफायर. One is universal and the second quantifier is existential quantifier. Universal quantifier का मतलब है जो सबके लिए कॉमन है, for all. We all have eyes, we all have nose, we all have ears, we all have long hair. Is it okay? We all have long hair? No, we don't have all have long hairs. There exist some people who have long hair. So long hair is a specialty. There exist some people only. So it is a quantifier which is existential quantifier, and we all have nose, eyes, teeth. Then it is called the universal quantifier. Suppose natural number 1 2 3 4 5 6, this is a universal. And existential क्या होगा? स्पेशली अगर हम उसको कुछ स्पेसिफिक केस कर दें, लाइक x स्क्वायर इज 9, देन इट इज ए स्पेसिफिक केस. तो देयर एग्जिस्ट सम x, कोई ऐसा x जरूर होगा जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी. दैट इज कॉल्ड द एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ओके,
चलो अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ. सबसे पहले आप लिखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर की. सबसे पहले आप लिखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर. The phrase I also mention here, you can copy from here. The phrase for all denoted by this symbol. The phrase for all is called the universal quantifier. For all is called the universal quantifier. The phrase for all denoted by this symbol is called universal quantifier. For example, आप इंग्लिश में लिखिएगा. ये सिंबल कुछ नहीं, अभी कोई सिंबल नहीं आपको यहाँ पे लगाना है. You write in the English, all human beings are mortal. All human beings are mortal. All human beings are mortal. Okay, all human beings are mortal. So all है, ये सबके लिए आया है. तो px let हम क्या लिखेंगे? let px. px किसको बता रहा है? px बता रहा है preposition को. let px denote let px denote x is a mortal. x is a mortal. तो हम इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कैसे लिख सकते हैं? फॉर ऑल x px. इसका मतलब क्या है? सारे px या सारे x कैसे हैं? मॉर्टल. और x क्या है? ऑल ह्यूमन बीइंग. Next example, we can say every student pass the exam if they score 40%. This is for all. ये कोई भी exception नहीं है. तो if pass the examination with 40% is your px, then you can write this sentence as for all x px. तो इतना बड़ा इंग्लिश में सेंटेंस लिखने की बजाय you can write for all x px. आपको बस ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप px यहाँ पे किसको कह रहे हो. ओके, तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स मीन्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल. तो इसका इंग्लिश में तो ये मीनिंग होगा, आपने कहीं पे इनक्रिप्ट कर दिया और आपने शॉर्ट में ये लिख दिया, तो ये आपका क्या बन गया? कोड हो गया एक. ये आप मैथमेटिकली या आपने इसको लैंग्वेज ऑफ लॉजिक में चेंज कर दिया इंग्लिश के सेंटेंस को. अब सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें लिखिए आप. क्या इसका ट्रुथ वैल्यू है? यस, इट हैज इट्स ट्रुथ वैल्यू. फॉर ऑल एक्स पी एक्स हैज इट्स ट्रुथ वैल्यू. एंड px कोई भी स्टेटमेंट है उसका कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है. यहाँ पे जो ये हम फॉर ऑल लिख रहे हैं px, उसका कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है. लेकिन जब हम उसको इस क्वांटिफाई कर देते हैं तब उसका वैल्यू है. क्यों? क्योंकि px हमने किसको कहा? x. px हमने किसको कहा? ऊपर देखिए आप, x इज मॉर्टल. अब हु इज x? हु इज x आपको तो आपने मेंशन ही नहीं किया. जब आपने हु इज x मेंशन ही नहीं किया तो इसका मतलब इसका कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है. बट व्हेन यू राइट फॉर ऑल एक्स एंड ऑल ह्यूमन एंड देन यू राइट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, देन उसका वैल्यू हो गया, ट्रुथ वैल्यू हो गया. तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है. फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू इफ पी एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स इन यूनिवर्स. This capital U stands for the universe. You can write only capital U also. For x px is true if px is true for every x in universe. For all x px is false
if and only if px is false at least for one value of x. अगर x का एक वैल्यू के लिए भी ये बात गलत है, एक भी आदमी ऐसा है जो मॉर्टल नहीं है, मिल गया हमको, तो हमारा ये फ्रेज या हमारा इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो जब फॉर ऑल लिखा है तो इसका मतलब फॉर ऑल ही है, वो सब में यूनिवर्स के लिए होना चाहिए. एक्सेप्शंस आर नॉट अलाउड हियर. ओके, देन द सेकंड वन इज देयर एग्जिस्ट. तो आप लिखिए वहां पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. यू राइट हियर existential quantifier. Existential quantifier. The phrase there exist denoted by this symbol is known as existential quantifier. For example, there exists x such that x square equals to 16. Yes, it is possible. X equal to 4 के लिए this relation is true. So we can write there exists x belongs to R px, or you can write this. This is called quantifier. Okay. This is true for this. So how can you write it? Or what are the truth value of this? This is two important point. Note it. There exists x px is true if px is true for at least one. एक के लिए भी सही है तो there exist has a true value truth. True value है इसका. अगर px is false for every x in universe. अगर यूनिवर्स में सबके लिए ये बात there exists x, f of x is false for every x. अगर सबके लिए ये बात नहीं सही है then it is false. अगर एक के लिए भी लागू होगा, एक के लिए भी सही होगा, then there exists x. तो ये true हो जाएगा. This is called existential quantifier. This is called existential quantifier.